So question, the total number of planets revolving around the sun is option A 5, B 8, C 7 and D 6. The correct option is 8. Because before 2005 there were 9 planets, and in 2005 what happened, in International Astronomical Union has decided that the Pluto is not following the rules of planets, therefore it has been converted into dwarf planets, and thereafter we have only 8 planets after removing Pluto. So we can say 8 planets. Next question, in a solar or lunar eclipse, the region of Earth's shadow is divided into option A 5 parts, B 4 parts, C 2 parts, D 3 parts. And the correct option is 3 parts. We can see like that, suppose we have a sun here, and here we have a moon. Then what is happening? The sun is giving their light, and these lights will go like, if the light is going like this, so this part, and we can say like this part, when the sun is giving their light, here it is moon is completely blocking, and then this side, this is the complete shadow. Then this complete shadow area is known as umbra. This complete shadow area during the solar eclipse, or you can be able to see this complete shadow area. On the earth, the people living in this, they will find complete shadow, darkness. And we can say like, another that we are going to see, here it is, we have a sun and then we have a moon, and here the light is going. So this is, you understood, it is umbra. But a part of it, there is some portion, if I am making it to move from here to here, so this portion has some amount of what I said, that some portion of diffuse light, not darkness, little bit darkness, and that is known as penumbra. Penumbra. This side also you can see that in this area region also, this is your penumbra. So it is in a diffuse light, it will be there, some amount of light will be there, it is not completely partial darkness. Thereafter another portion is there, when then these lights are moving from the moon, and where it is intersecting, after that some light will be available in this region, it is known as antumbra. Antumbra. So therefore we have 3 parts. Therefore we can say that there are 3 parts we have: umbra, penumbra and antumbra. In a solar or lunar eclipse, the region of Earth's shadow is divided into 3 parts. Next question is, day and night are equal at the option A prime meridian, option B Antarctic, option C poles, and option D equator. Correct option is equator. We can say like that if it is our Earth and this is our equator, and if we have a sun, the sunlight during the, if I say that on 23rd, on 22nd March and on 23rd September, what happened? The sun rays completely falls on the equator. At that time, the whole Earth receives half Earth in the northern and southern hemisphere. Everywhere, you know that
half portion is covered with light, half portion is covered with darkness. Light is not able to come. So there is a day and there is a night in the northern and southern hemispheres. Means it is 12 hours, 12 hours, 12 hours and 12 hours day and night, equal day and night when the sun is falling on the sun rays are falling on the equator. But even then, if I say that, even then, and this region has also everywhere, but on it is on the 22nd March and 23rd September. But what happened? Earth is in a tilted one. It is actually equator over here, and our North Pole and South Pole. Here it is North and South, and this is known as Antarctica, and this is an Arctic region, polar region. And when the sun rays are falling vertically over a Tropic of Capricorn during the December month, so what happened? So this region, this much of the region is receiving light. This much of the region is receiving light. And on which day, if I say 22nd December, we can say 22nd December. So here it is. Then the southern hemisphere receives this region. If I say that this is the total half portion and more than half. So it is the day is more than 12 hours and night is of 10 hours. Means for 14 hours day and for 10 hours night, you can say. Here it is. In the northern hemisphere, what happened during the December month? Only less than half. You can see this is the total half, but in northern hemisphere, what happened? Only we have some portion is receiving light, so 10 hours day and 14 hours night हो जाता है. तो in the winter period में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि डे जो हो जाता है छोटा और नाइट जो होता है ज्यादा बड़ा होता है. लेकिन इक्वेटर पे देखोगे हाफ पोर्शन पे अभी भी लाइट आ रहा है, अभी भी. तो थ्रू आउट द ईयर इक्वेटर का जो पोर्शन होता है वो हाफ पोर्शन लाइट एंड डे लेते रहता है. तो इसका मतलब है ओनली इक्वेटर एक ऐसा पोर्शन है जहां पर इक्वल डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर होता है. तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है, आंसर है, वो है आपको इक्वेटर. इक्वेटर हमेशा ही इक्वल डे एंड नाइट प्रोड्यूस करता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ सन. अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ऑर्बिट मार्स. तो देखा जाए, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, सी चाइना, डी इंडिया. And the correct option is India. You know that it is on the 24th, it is on the 24th November 2013, India has launched its Mars orbital mission. Mars orbital mission. And it is in the 10 to 11 months, it is able to reach on 5th September 2014. Our satellite is able to reach Mars and then start revolving around Mars. So we have been able to get the success, but so in the Asia, India is the number one who is able to reach Mars. And in the world, India is not the number one in case of able to reach earlier USA and all. But in the world, India is the first who is able to reach to the Mars in his first attempt. Another countries, दूसरे countries ने अपने first attempt में fail हो गए थे, but India अपने first attempt में ही पहुंच गया था. So ये importance है India के related आपको Mars orbital mission, that is मंगलयान. Which of the following scientists proved that the path of each planet around the sun is elliptical? Option A Kepler, B Galileo, C Newton, D Copernicus. जो बच्चे क्लास 11th में साइंस लिए होंगे उनको पता होगा कि केपलर ही सही है, केपलर लॉ. तो केपलर इसका करेक्ट ऑप्शन है. केपलर इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसके 3 लॉ हैं और उसका जो इनवर्स लॉ है, इनवर्स लॉ ऑफ द फोर्स, वो प्रूफ करता है कि कोई भी चीज ग्रेविटी के अकॉर्डिंग किसी चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो एलिप्टिकल ही होगा. इनवर्स लॉ अपने क्लास 9th 10th में ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस.
तो इनवर्स स्क्वायर लॉ बताता है कि कोई भी चीज एलिप्टिकल होगा, जैसे अर्थ के चारों तरफ मून भी जो रिवॉल्व कर रहा है वो भी एलिप्टिकल में ही है, एक अंडाकार वृत्त में मूव कर रहा है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यस, केपलर। लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस इन द नियरली ऑप्शन ए 8 मिनट, बी 2 मिनट, सी 6 मिनट, डी 4 मिनट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नियरली 8 मिनट। हमारी लगभग एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस जो डिस्टेंस है सन का अर्थ से लगभग 15 करोड़ है, 15 करोड़ है। और सन से लाइट यदि अर्थ पे पहुंचेगी तो उसको 15 करोड़ का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और लाइट की जो स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमने स्पीड से डिवाइड कर दिया डिस्टेंस को, तो ये 5 जीरो और ये 5 जीरो कट गए, एंड 3 5 15, तो ये हो गया आपको 500 सेकेंड। और सेकेंड्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड्स होगा। तो ये जो आपने अभी देखा 8 मिनट इसका करेक्ट ऑप्शन है। A spinning neutron star is known as option A white dwarf, B black hole, C pulsar, D quasar। सो इसका करेक्ट आंसर है पल्सर। आप ये देखेंगे कि जो सन है, जो हमारा जो सन है ये एवरेज साइज सन है, उससे भी थोड़ा छोटा है। यदि सन इससे जो बड़ा सन है तो बड़े सन जो स्टार्स हैं, बड़े सन, वो सन एक नॉर्मल होता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी रेडिएटिंग फेज में जाता है, एनर्जी बहुत प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हीट रेडिएट करते रहता है बहुत ज़्यादा, फिर धीरे धीरे अंदर की खिंचाव कम होता है, फैलाव ज़्यादा होता है, तो रेड सुपर जायंट में बदलता है, रेड कलर का सुपर जायंट बदलेगा। फिर उसके बाद ये रेड सुपर जायंट के बाद ये ब्लास्ट करता है, जिसको सुपरनोवा कहते हैं। तो ये सुपरनोवा फेज में आता है, यहां से ये न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनता है। और न्यूट्रॉन स्टार एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा बड़ा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और ये रेज पार्टिकल्स निकलते रहते हैं और ये स्पिन करते रहता है, तो स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार कहेंगे। और ये स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर कहा जाता है, स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज pulsar। Next question, when the moon completely covers the sun it is known as। और अभी हमने समझाया है कि जब मून जब कंप्लीटली सन के द्वारा कवर हो जाएगा तो जिस एरिया पे डार्क पूरा जाता है, शैडो कंप्लीटली अर्थ पे पहुंचता है, तो दैट इज अम्ब्रा। द कंप्लीट शैडो रीजन इज द अम्ब्रा, द ऑप्शन ए। द एंटम्ब्रा, the umbra, penumbra, none of these, the answer is umbra। Next question, the darkest portion of the shadow cast during an eclipse is corona, umbra, penumbra, and option D black hole। option A corona, option B umbra, C penumbra, D black hole। अभी हमने आपको बताया कि जब शैडो मून या सन का जब सोलार और लूनार एक्लिप्स के समय होता है तो डार्केस्ट पोर्शन जो होता है दैट इज अम्ब्रा। द करेक्ट ऑप्शन इज
umbra. The next question that we'll see, the planet which has the highest surface temperature is option A, Jupiter, B, Earth, C, Pluto, D, Venus. And इसका करेक्ट ऑप्शन है वेनस. हमारे सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी. मरकरी के बाद वेनस आ जाता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स एटसेट्रा. Generally, sun rays will reach more to the what? Mercury. And Mercury should get very warm, hot. लेकिन मरकरी वार्म नहीं होता है, रात में बहुत जल्द ठंडा भी हो जाता है. तो कहने का मतलब है कि वेनस जो है इसके चारों तरफ, तो नेक्स्ट मरकरी के बाद नियरेस्ट कौन हो गया? वेनस. और इसके चारों तरफ हाई अमाउंट ऑफ गैस है, और स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. और जब सन रेज इस पर पहुंचता है, तो ये जब सन रेज पहुंचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वापिस होते समय इसको, जब रिफ्लेक्ट होता है तो वापिस होते समय इसे रोक लेता है. और एक तो बहुत ज्यादा हीट है, नजदीक में है, और उसके बाद वापिस होते समय इसका हीट को रोक लेना, इससे यहाँ का टेम्परेचर लगभग 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. तो सबसे हॉटेस्ट सरफेस टेम्परेचर वाला कोई प्लेनेट है तो दैट इज आपका यस Venus. The correct option is Venus.